Hello students, welcome to the next video of a function class. Today we will discuss equal function and how many function can be defined from one set to another set and some problems of the study material. Before starting, first we start Brahmana. शांति 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 सुस्त First we discuss equal function. So last class we are already discussed algebra function, addition, subtraction, multiplication, division, reciprocal function. Okay. So equal function two functions f of x and g of x are said to be equal if domain number 1 domain of f equal to domain of G. Number 2 codomain of F equal to codomain of G. Number 3 f of x equal to g of x for all x belongs to domain, or all x belongs to domain. Okay. So they have a same domain and a codomain, and the value of fx and gx are equal for all x belongs to domain. Okay. For example, let f is a mapping from R to R and G is a mapping from R to R defined by f of x root over x square and g of x and g of x mod x modulus x is f equal to g question mark. Here f is a mapping R to R, g is a mapping R to R, fx equal to root over x square and g of x mod x is f equal to g. For determination two functions are equal, first you have to find a domain, answer. Here fx equal to root over x square. Root over x square, you know square root function is defined, square root under must be positive, greater than or equal to 0. For all x belongs to R, x square must be greater than 0 or equal to 0. That means fx is defined for all x belongs to R. fx is defined if x square must be greater than or equal to 0, which is always true, which is true for all x belongs to R. Therefore, domain of f equal to set of real number. G of x mod x, we know mod x is defined, mod x is defined, mod x is defined for all x belongs to R. Therefore, domain of G is also set of real number. Here domain of f equal to domain of G and the codomain of f equal to R, codomain of G is also R.
codomain of f equal to codomain of G, which is a set of real number. We know fx, here fx equal to root over x square means plus or minus x, and plus or minus x equal to mod x. Here gx equal to mod x, that's why fx equal to mod x equal to gx, therefore f equal to g. So these two functions are equal because they have the same domain and codomain, and fx equal to mod x root x square means this is the mod x, which is equal to gx. Okay, now we go to another question. Let fx equal to log of x square and g of x equal to 2 log x. Is f equal to g? Okay, now we test these two functions are equal or not. Answer, here fx equal to log x square. First you have to find a domain. Log x square is defined if x square must be greater than or equal to 0. We know for all x belongs to R, x square must be greater than 0, therefore domain of log x square equal to set of real number. Gx, so here gx fx equal to this one. Gx means 2 log x. So log x is defined, gx is defined if x must be greater than 0, x square must be greater than 0, not greater than or equal to 0. So x square greater than 0. So here fx log x square is defined if x square must be greater than 0, and this is possible for all x belongs to r minus 0. For all x belongs to r minus 0, x square must be greater than 0. Therefore domain of the function equal to r minus 0. Do you understand? Here log x square is defined if x square greater than 0. If x equal to 0, then x square is 0, log 0 is minus infinity. So log of 0 undefined, you know. So log function defined x square value greater than 0 hava padiyo. So x square is greater than 0 means for all x belongs to r minus 0. For all x belongs to r minus 0, x square is positive, therefore the domain of the function is r minus 0. Here gx is defined if x must be greater than 0. Okay, so x greater than 0 means x belongs to open bracket 0 to infinity. Therefore the domain of the function dg equal to open interval 0 to infinity. Domain of f set of real number minus 0. Domain of g 0 to infinity. Domain of f is not equal to domain of g, therefore f is not equal to g. Okay, जेहेतु domain डायरेक्ट equal नहीं, आउ आमे को domain ना नहीं fx equal to gx देखिया दरकार नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख पारियो that these functions are not equal, whereas log of x square this is 2 into log x, because you know log x to the power m equal to m log x and 2 log x equal to gx. 2 log x equal to gx. So fx equal to log x square equal to 2 log x and 2 log x equal to gx. Whereas fx equal to gx, but domain of f is not equal to domain of g, that's why f is not equal to g. देखो log x square टा 2 log x संगे सेम होबो, तार तो fx रो वैल्यू gx वैल्यू संगे समान, किंतु they have not same domain, that's why these two functions are not equal.
Next, we go to another problems. Find the domain of the following function. Number 1, fx equal to log of 5x minus x square by 4 the whole root. Okay, the whole root. So, how can you find the domain? You know square root function is defined, square root under function must be greater than or equal to 0, but the log of fx is defined, fx must be positive. देखो ये कौन अच्छी स्क्वायर रूट फंक्शन अच्छी ता सहित लॉगरिथम फंक्शन अच्छी स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन हम स्क्वायर रूट अंडर फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हवा दरकार और लॉग रो जो एंगलटा थिबो सेटा कोन हवा दरकार मस्ट बी पॉजिटिव. ओके, आंसर 1, fx is defined if square root under function greater than or equal to 0 and a logarithm function log x is defined if x positive. So, log this one 5x minus x square by 4 must be greater than 0. So, square root अच्छी बोली रूट भितर जहाँ अच्छी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हवा दरकार लॉग रो एंगलटा मस्ट बी पॉजिटिव हवा दरकार. ओके, दैट इम्प्लाइड you know log x equal to a. तो log x equal to a means x equal to e to the power a कहीं बेसटा किसी ना बोले e रहिबो जदि बेसटा 2 थियो माने हमें 2 रो पावर a लिखिबा. ओके, सो log of 5x square minus 4 minus x square by 4 greater than equal to 0. If we take log to the right side, what happen? So 5x minus x square by 4 must be greater than e to the power 0 because base is e. That implied 5x minus x square is greater than equal to 4 because e to the power 0 equal to 1. That implied 5x minus x square minus 4 greater than equal to 0. Now take it common minus, so x square minus 5x plus 4 greater than equal to 0 multiply कर दियो minus t multiply कर ले x square minus 5x plus 4 less than equal to 0. So आपको फैक्टराइजेशन कर दियो नहीं कि x square minus 4x minus x plus 4 less than equal to 0. So x take it common, here minus 1 take it common, less than equal to 0. That implied x minus 4 into x minus 1 less than equal to 0. So by equating each factor equal to 0, you will get x equal to 4 and here x equal to 1. Then write in a number line, this is 1, 4 plus infinite and this is minus infinite. So here the rightmost region is positive because we make all the coefficient of x is positive and the coefficient in front of 2 factor here also positive. So the rightmost region is positive, this one is negative and this is positive. So a part amara positive, a part negative, a part positive. So we consider x minus 4 into x minus 1 less than equal to 0 means x belongs to, we choose the negative part, x belongs to close interval 1 to 4. Okay. Now another condition is there, 5x minus x square by 4 greater than 0. So how can you calculate its root? This is a rational algebraic inequation. देखो ये 5x minus x square अच्छी तो 5x minus x square by 4 greater than 0 means first to make factor, take it non-repeated linear factorization form right. So first write factorization form, that is x into 5 minus x by 4 greater than 0. So take it common, x रो coefficient minus अच्छी ना plus कर दियो ये तो minus t common नियो x into x minus 5. Okay, x into x minus 5 by 4 greater than 0, that implied x into x minus 5 by 4 less than 0.
तो ये न्यूमरेटर टाक 0 कले यू विल गेट द रूट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -5 तेणु ये आसो आमर सो आर रूटा बाहर करा कौन करा पड़ो गोटे आसला 0 आ गोटे 4 आसला ना कि 0 गोटे आसो 4 गोटे आसो एक्सट्रा 0 एटा 4 एटा प्लस इनफिनिट एटा माइनस इनफिनिट तेणु रेशनल फॉर्म थी मैंने तुम फास्ट न्यूमरेटर 0 करियो डिनोमिनेटर 0 कर एक्स वैल्यू बाहर करियो ये तो डिनोमिनेटर किसी ना 4 अच्छी ना सो एक्सप्रेशन थी तुम इक्वल टू 0 कर रूटा बाहर कर था ओके सो गोटे आसो 0 आ गोटे 5 आसो 0 गोटे 5 आसो ना कि ए फैक्टर 0 कले एक्सट्रा 0 आएगा एक्स माइनस 5 0 कले एक्सट्रा 5 आएगा सो दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव अच्छी सो ये कौन अच्छी नेगेटिव अच्छी सो वी कंसीडर द नेगेटिव पार्ट सो हियर x belongs to since x into x minus 5 by 4 negative less than 0 so x must be open interval 0 to 5 so what is its domain माने कौन हवा दरकार so x belongs to 1 to 4 and x belongs to 0 to 5 ये जो दीटा वैल्यू आसला x रो आर आम इंटरसेक्शन पार्ट नेबा पड़ियो now we consider its intersection part because both condition must be satisfied log of this one greater than or equal to 0 and 5x minus x square by 4 must be greater than 0 so we take the its intersection part so this one is 1 to 4 now plus infinite minus infinite 1 to 4 अच्छी क्लोज इंटरवल 1 to 4 इट अच्छी 0 to 5 so 0 here 0 is there तो 0 to 5 means here 5 तो 0 to 5 तो 0 to 5 and 1 to 4 ये दीराक सेट इंटरसेक्शन पार्टा कौन आसो नेचुरली इट विल बी क्लोज इंटरवल 1 to 4 therefore domain of the function df equal to close interval 1 4 intersection open interval 0 5 so which is equal to close interval 1 comma 4 close interval 1 comma 4 this is the domain of the function now okay so domain of the function close interval 1 comma 4 ए दीटा आगर इंटरसेक्शन नेबा पड़ियो ओके नेक्स्ट वी डू अनदर प्रॉब्लम दैट इज नंबर 2 so third one sorry second fx equal to answer 2 number टा here fx equal to 1 by square root x plus mod x you know square root function is defined square root under function must be greater than or equal to 0 but here square root to denominator part is there that means fx is defined if x plus mod x must be greater than 0 that implied mod x greater than minus x so when mod x greater than minus x x must be positive integer कहीं जो एक्सटा पॉजिटिव इंटीजर हम सॉरी एक्सटा गोटे पॉजिटिव रियल नंबर हम माइनस एक्सटा कौन हम नेगेटिव हम एक्सटा नेगेटिव हेल्ले मोड एक्स रहा कौन हम तुमने एक्सटा कौन हम जे पॉजिटिव रियल नंबर राइट साइडटा कौन हम नेगेटिव हम यहाँ कौन हम पॉजिटिव संख्यार मोडटा कौन हम एक्स हम ना नहीं सो मोड एक्सटा ग्रेटर देन माइनस एक्स हम this is only possible x must be positive integer positive real number जदि एक्सट्रा नेगेटिव हम व्हाट हैपन देखो एक्सट्रा नेगेटिव नेले यहाँ कौन अच्छी सपोज एक्स इक्वल टू -2 नब -2 नेले माइनस -2 कौन अच्छी 2 है -2 रोड कौन अच्छी 2 होची माइनस -2 2 है राइट साइडटा -2 रोडटा कौन अच्छी 2 है 2 कौन 2 ग्रेटर कि ना तेणु नेगेटिव संख्या दिस इज नॉट पॉसिबल
So mod x is always mod x greater than minus x. This is possible only x must be positive real number. That implied x belongs to positive real number means 0 to infinite. X टा जदि 0 नब माइनस 0 होची 0 रो मोड 0 इक्वल होची एक्सटा पॉजिटिव संख्या नेले एडार भेला नेगेटिव आउची एडा पॉजिटिव आउची पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या टू ग्रेटर हबो एक्सटा जते नेगेटिव संख्या नब नेगेटिव इनटू नेगेटिव कोन होची पॉजिटिव एक्स नेगेटिव संख्यार मोडटा कोन हबो पॉजिटिव आगा सेठी कोन होची इक्वल हैला किंतु ग्रेटर हबोनी सो मोड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स दैट मस्ट बी एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinite सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन ओपन इंटरवल 0 to infinite 0 हबोनी एठी 0 ले इक्वल होची ना नहीं नंबर 2 नेक्स्ट थर्ड अछि हमरो fx इक्वल टू log of fx इक्वल log of 12 by x square minus x. Okay, you can do this problem using concept of first number. तो फर्स्ट नंबर टा हमें जमती करथिले एटा भी सेमती निजे करिवो एटा नेक्स्ट नंबर 4 हियर fx इक्वल टू 1 by mod of square root x plus bracket function x plus greatest integer function. Here fx is defined if x plus bracket x must be greater than 0. So x plus bracket x greater than 0 means that implied bracket x greater than minus x. अच्छा bracket x रो होला minus x to greater हबो. For which value of x bracket x must be greater than minus x. If we take x is a positive integer देखो एक्स्ट्रा जतलो पॉजिटिव इंटीजर नबो एडी कोन हबो एडार फिला कोन होची नेगेटिव हबो एडा कोन होची पॉजिटिव हबो पॉजिटिव रियल नंबर जान होचनी हो पॉजिटिव रियल नंबर सपोज x इक्वल टू सपोज 3 और 2 पगले एडा कोन होची -2 हला एडा -2 हला लेफ्ट साइड टा कोन होची 2 ब्रैकेट 2 डा कोन हबो 2 एडा 2 पगले -2 तो 2 डा -2 टू गेट होची सपोज यू टेक 2.1 तो 2.1 ले कोन होची एडा -2.1 हला एडा -2.1 ब्रैकेट केते 2 तो 2 डा -2.1 टू ग्रेटर होची तो पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू पाई सैटिस्फाई हबो इफ वी पुट x नेगेटिव मन कर x तुम पकइबो -2 नबो एक्स्ट्रा -2 पकले कोन होची एडा -2 कोन होची 2 हला जदि एक्स्ट्रा तुम नेगेटिव संख्या नबो -2 नबो माने -2 ना लेडा कोन होची -2 2 हला एडा -2 होची -2 ब्रैकेट केते -2 रा कोन 2 टू ग्रेटर होची कि नाइ सो दिस इज नॉट पॉसिबल इफ वी टेक x इक्वल -2.1 नबो -2.1 हले कोन होची -2.1 2.1 हला एडा 2.1 हला एडा कोन होची -2.1 ब्रैकेट फंक्शन केते -3 टा कोन 2.1 ग्रेटर होची कि दिस इज नॉट पॉसिबल तो ब्रैकेट x ग्रेटर देन -x ब्रैकेट x रो वैल्यू डा -x टू ग्रेटर हबो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर दैट मीन्स x मस्ट बी 0 to infinite x must be 0 to infinite so domain of the function is also 0 to infinite. Okay, next number 5 number 4 अच्छा next fx equal to fx 1 by एट कौन अच्छी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए नंबरटा आम करवा देख एटा हूँ बोधे 6 नंबरटा एटा आम 5 देथिबा ना कि हाँ सो fx इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर x माइनस ब्रैकेट x so here fx is possible fx is defined if x minus bracket x must be greater than 0 that means x must be greater than bracket x so
bracket x must be less than x, bracket x must be less than x देख सो x रो को वैल्यू ब्रैकेट x टा x टू लेस हम देख इफ वी टेक x इक्वल टू 2 x टा 2 ना एटा 2 आसीबो एटा 2 आसिला एटा 2 टा कोन 2 संगे इक्वल हैला ना सपोज यू टेक x इक्वल टू 3 पकले एटा कोन 3 होची एटा भी 3 हैला इक्वल हैला लेस देन 1 ना बा -3 नबो -3 रे भी एटा -3 होची एटा -3 होची तेणु जो एक्सट्रा गोटे इंटीजर हम दिस इज नॉट हैपन ब्रैकेट x इज नॉट लेस देन x इंटीजर पे इक्वल हम इफ टेक x जे 1.2 जो फ्रैक्शनल नेबा 1.2 नेबा देखो एक्सट्रा जो 1.2 नबो एटा होची 1.2 एटा 1.2 रे ब्रैकेट फंक्शन केते 1 हला तो 1 दा 1.2 रे लेस हम बा -1.2 नबो मन -1.2 एटा -1.2 रे ब्रैकेट फंक्शन केते -2 -2 डा -1.2 रू लेस होची सो दिस इज पॉसिबल दिस इज bracket x is less than x for x must be fraction not integer x not be integer that means x belongs to set of real number minus z set therefore the domain of the function r minus z the integer point is same hobo except integer all values are satisfied bracket x is less than x for all x belongs to r minus z therefore the domain of the function is r minus z okay next 6 number ta देखो कौन करा हबो 6 number here fx equal to 1 by log 1 minus x plus mod x एट दीटा फंक्शन एड हो ना दीटा फंक्शन एड थी बोले ए फंक्शन डोमेन नब ए फंक्शन डोमेन नब दीटा अगर डोमेन इंटरसेक्शन पार्टा को हमको बाहर करिया पड़ियो ओके आंसर 6 नंबर यार fx 1 by log 1 minus x base 10 plus root of x plus 2 now let it be gx plus hx so fx equal to gx plus hx where gx 1 by log of 1 minus x and h of x equal to root of x plus 2 you know gx is defined if log of 1 minus x not equal to 0 is defined log of 1 minus x not equal to 0 and 1 minus x must be greater than 0 देखो log डालसी माने log रो एंगल ला must be positive होबा दरकार आ gx टा गोटे रेशनल फॉर्म अछि फंक्शन टा केतेबेले डिफाइंड होबो ना log 1 minus x टा not equal to 0 that implied log 1 minus x not equal to 0 means 1 minus x not equal to e power 0 it कोन अछि base 10 अछि base 10 means we take 10 to the power 0 नेबा पड़ियो and 1 minus x must be positive so 1 minus x not equal to 10 per 0 means 1 and 1 minus x greater than 0 that implied 1 minus x not equal to 1 means minus x not equal to 0 that implied x not equal to 0 so x not equal to 0 and 1 greater than x 1 greater than x means x must be less than 1 so x टा 1 रू सान होबो but not equal to 0 therefore x not equal to 0 and x less than 1 that means x must be minus infinity to 1 minus 0 ना कि x टा 1 रू सान माने minus infinity to 1 होबो not equal to 0 माने minus 0 पड़ियो so domain of the function domain of g equal to minus infinity comma open interval 1 minus 0 this is the domain of g next hx domain मार करिया पड़ियो you know hx equal to root over x plus 2 and hx is defined square root under must be greater than 0
hx is defined if x plus 2 must be greater than or equal to 0. That implied x greater than or equal to minus 2. So x belongs to closed interval minus 2 to infinite. So dh domain of h equal to closed interval minus 2 comma infinite. Now the domain of f equal to domain of g intersection domain of h. तो fx रो डोमेन बाहर करिया गले हमको कौन नबा पड़ियो gx रो डोमेन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h. ओके, so domain of f equal to domain of g intersection domain of h. Okay, now minus infinite to 1 minus 0 intersection minus 2 to infinite. देखा को हमें इंटरवल फॉर्म लिखवा एटा माइनस एटा होची 1, so this one is minus 2 अच्छे 0 अच्छे minus 2 एटा 1 रहला प्लस इन्फिनेट एंड माइनस इन्फिनेट. Yes, minus infinite to 1 minus 0 and this equal to हम लिख पारे minus infinite to 0 minus infinite to 0 union 0 to 1 intersection minus 2 to infinite. So minus infinite to 0 union 0 to 1 intersection minus 2 to infinite intersection minus 2 to infinite. देखो a set रो यूनियन रो आउ a set रो इंटरसेक्शन बाहर करिया. तो इंटरसेक्शन पार्ट केते रहला -2 to 0 अछि यूनियन 0 to 1 रहबो ए भीतर रहबो. काई ओवरलैपिंग एतिकी आउ एतिकी रो ओवरलैपिंग कोन होला ए भीतर रहला. तो -2 to 0 यूनियन 0 to 1. सो -2 टा एडी जेतु क्लोज अछि -2 टा क्लोज हबो 0 टा एडी ओपन अछि तनो 0 टा ओपन हबो 1 टा भी ओपन हबो. So its intersection part is -2 close up to 0 open union 0 1 union 0. कहीं ये 0 9 ना open अच्छी तो 0 टा open होबो 1 टा भी open होबो. Okay, this is the domain of fx. तो दीटा फंक्शन प्लस हेथिबो बा माइनस हेथिबो मल्टीप्लिकेशन थिले से मनगर इंटरसेक्शन बाहर करिया पड़ो डोमेन रो इंटरसेक्शन ना. ओके, if fx equal to log of 1 plus x by 1 minus x and g of x equal to 3x plus x cube by 1 plus 3x square, then prove that f of g of x equal to 3 into f of x. So how to prove that f of g of x equal to 3 into f of x? Here f of gx means f of g of x. Now substitute the value of g of x. So g of x 3x plus x cube by 1 plus 3x square. Now f of this one means you have to replace 3x plus x cube by 1 plus 3x square in place of x in fx. तो f of एतिक माने तुम fx रे x जगह रे रिप्लेस करिया आमे आगुडो एमदार प्रॉब्लम भी ऑन करछे ना नहीं. So replace 3x plus x cube by 1 plus 3x square in place of x. fx रे आमे सब्स्टिट्यूट करिया. So this is log of एडी x अछि log 1 plus x x जगह रे पकेबा 1 plus 3x plus x cube by 1 plus 3x square whole by 1 minus x जगह रे पकेबा 3x plus x cube by 1 plus 3x square. Okay, now simplify this one. So this is log of, now take it LCM in numerator 1 plus 3x square. So 1 plus 3x square plus 3x plus x cube whole by 1 plus 3x square minus 3x minus x cube. Now 1 plus 3x square by 1 plus 3x square cancel that log of 1 plus x cube or x cube plus 1 x cube plus 1
plus 3x square whole by 1 minus 3x plus 3x square minus 3x minus x cube, and this is log of x cube plus 1 plus 3x square means this is the x plus 1 whole cube by 1 minus x whole cube, 1 minus x whole cube. Okay, so 1 plus 3x square minus 3x minus x cube, this is 1 minus x whole cube. X cube plus 1 plus 3x square means x plus 1 whole cube. Now log of 1 plus x by 1 minus x whole cube, and you know log of m to the power n equal to m log n. So 3 into log of 1 plus x by 1 minus x, and this is 3 into log of 1 plus x by 1 minus x, f of x. Log of 1 plus x by 1 minus x equal to f of x. So f of g of x equal to 3 into f of x. Okay. So in this way you can do. Do you understand? Okay. Next, if fx equal to log of 1 plus x by 1 minus x, then prove that f of 2x by 1 plus x square equal to 2 into f of x. So in this way we prove this one. Answer. Here fx equal to this one. Now f of 2x by 1 plus x square means replace 2x by 1 plus x square in place of x in fx. तेणु तुम fx रे x जगह रे 2x by 1 plus x square टे रिप्लेस करिवो ना कि लिखिवो. सो log of 1 plus कौन कराबो x जगह रे 2x by 1 plus x square लिखिवो. 2x by 1 plus x square by 1 minus x जगह रे लिखिवो रिप्लेस 2x by 1 plus x square in place of x. So 2x by 1 plus x square. Now simplify this one. Log of एडी तुम एलसीएम नब न्यूमरेटर 1 plus x square plus 2x एलसीएम आसियो 1 plus x square. सेमती डिनोमिनेटर एलसीएम आसियो 1 plus x square. एटा सिंप्लीफाई कले 1 plus x square minus 2x 1 plus x square cancel. Now log of 1 plus x square plus 2x means x plus 1 whole square by 1 plus x square minus 2x. This one 1 minus x whole square and log of 1 plus x by 1 minus x whole square. So x plus 1 square by 1 minus x square. This is 1 plus x by 1 minus x whole square and 2 into log of 1 plus x by 1 minus x. This is 2 into f of x. So log of 2x by 1 plus x square equal to 2 into f of x. Okay. Next we do another problem. If fx equal to cos of log x, then prove that fx into fy minus 1 by 2 into f of x by y plus f of x comma y, f of x into y equal to 0. Okay. So how can you prove this one? First you have to take fx into f of y. Answer. Here fx equal to log cos of log x. Now f of x into f of y. So f of x means cos of log x. F of y. F of y means cos of log y. Okay. F of x by y plus f of xy. F of x by y means you have to replace x by y in place of x. Cos of log x by y. Okay. Plus cos of log xy. So cos of log x by y means log x minus log y plus cos of
log xy means log x plus log y. Now cos a minus b plus cos a plus b. You know cos a plus b, this one is a, this one is b, a b. Cos a minus b plus cos a plus b, or cos a plus b plus cos a minus b. So 2 cos a into cos b. 2 cos a means log x. 2 cos a into cos b, b means log y. Okay. Now f of x into f of y minus half into f of x by y plus f of xy, okay, which is equal to f of x into f of y means cos of log x into cos of log y minus half into f of x by y plus f of xy, 2 into cos of log x into cos of log y. So 2 cancel. Now cos of log x into cos of log y minus cos of log x into cos log y. So cancel to each other and which is equal to 0. So hence this is RHS proved. So the proof is complete. In this way you can do. Next, find the range of the following function. Number 1, root over x square plus 2x plus 5. Number 2, mode of x minus 3. Number 3, 1 minus x minus 2 mode. Number 4, x minus 4 mode by x minus 4. So you know range means the value of fx is known as the range of the function. So how to calculate the range? First you have to take fx equal to y, then write x in terms of y. Okay. For which value of y x is defined, that value of y is called the range of the function. Answer 1. Let fx equal to y, that implied root over x square plus 2x plus 5 equal to y. Now squaring both sides, x square plus 2x plus 5 equal to y square, that implied x square plus 2x plus 5 minus y square equal to 0. So here x equal to, first you have to express the x in terms of y, because it is a quadratic in x. So here x equal to minus b plus or minus root over b square minus 4, a means 1, c means 5 minus y square by 2a. So minus 2 plus or minus root over 4 minus 20, okay, plus 4y square by 2, that implied x equal to minus 2 plus or minus root over 4y square minus 16. 4y square minus 4 minus 20, this is minus 16. So minus 16 by 2. Minus 2 plus or minus take it common, 4 टा में common नेबा, root भितरु 4 टा बाहर गले 2 होबो. So y square minus 4 by 2. तो 2 टा common नियो, minus 1 plus or minus root over y square minus 4 by 2. Okay, 2 to cancel. For which value of y x is defined? Here x equal to minus 1 plus or minus root over y square minus 4. You know square root function is defined, square root under function must be positive. So x is defined if y square minus 4 must be greater than or equal to 0. So its factorization form y plus 2 into y minus 2 greater than equal to 0. Take it number line. So here minus 2, this one is 2, because we get 2 root, one is minus 2, other is plus 2, and infinite, this one is minus infinite. The rightmost is on positive, negative, positive. Okay. Since y plus 2 into y minus 2 less than greater than equal to 0, so we take a positive value. That means y belongs to minus infinite to minus 2 union 2 to infinite.
but a square root function is always positive, so we take only positive value. Therefore the range of the function Rf equal to close interval 2 to infinite. Okay. जदि रूटा पचार था बोले आम माइनस इनफिनिटी टू यूनियन 2 टू इनफिनिट लिखि था जेहेतु ये आम कैलकुलेशन करवा रेंज ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट्स वाइज द रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 2 टू इनफिनिट. ओके नेक्स्ट नंबर 3. सो सॉरी नंबर 2 रो रेंज आम देखो कैलकुलेट करवा. फर्स्ट वी टेक fx आंसर नंबर 2. Here fx equal to mod of x minus 3. You know modulus function is always non-negative. Is always non-negative. It may be positive or 0. That x minus 3 is always greater than or equal to 0. So 0 less than x minus 3 mod greater than or equal to 0 and which is less than infinite. Therefore fx less than infinite and greater than equal to 0. That's why the range of the function close interval 0 to infinite. Okay, because for whatever may be the value of x, modulus function is always non-negative. It may be 0 or positive. Third one, here fx equal to 1 minus x minus 2 mod. एडी आम fx equal to y नहीं कैलकुलेशन करिया किसी आवश्यक नहीं बिकॉज वी नो द मॉडुलस फंक्शन इज नॉन नेगेटिव आम डायरेक्ट बाहर कर पारिया जे x माइनस 2 इज लेस देन इनफिनिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस मल्टीप्लाई कर दियो तो माइनस मल्टीप्लाई कले कौन हो इनइक्वालिटी चेंज हो बेटा माइनस इनफिनिट हम. सो माइनस इनफिनिट माइनस x माइनस 2 रो मोड व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं कि एमती आस माइनस टी मल्टीप्लाई कले माइनस 0 हम 0टा ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 2 रो मोड माइनस ऑफ x माइनस 2 रो मोड ग्रेटर देन माइनस इनफिनिट आपको आम एमती उल्टे लिखले आसो ये कौन अच्छी 1 अच्छी 1 ऐड कर दियो. सो ऐड 1 ऑन बोथ साइड दैट इम्प्लाइड देख 1 ऐड कले कौन अच्छी तो 1 ऐड कले कौन अच्छी 1 माइनस इनफिनिट. सो दिस इज अगेन माइनस इनफिनिट नहीं माइनस इनफिनिट 1 माइनस मोड ऑफ x माइनस 2 which is less than 1 आम प्लस 1 करिया ना कि तो माइनस इनफिनिट प्लस 1 दिस इज अगेन ऑल्सो माइनस इनफिनिट. सो fx लेस देन इक्वल टू 1 and greater than minus infinite, therefore the range of the function equal to minus infinite to 1 close interval 1 minus infinite. Okay, now third one is fourth one, x minus 4 or mode by x minus 4. You know mode of x minus 4, you know mode of x minus 4 equal to x minus 4 if x minus 4 greater than or equal to 0. So x minus 4 here fx equal to x minus 4 mode by x minus 4. Now this one x minus 4 mode by x minus 4. So which is equal to if x minus 4 greater than equal to 0, then mode of x minus 4 equal to x minus 4 by x minus 4. If x minus 4 less than 0, then mode of x minus 4 minus of x minus 4 by x minus 4. देखो जो x minus 4 टा पॉजिटिव होची से मोड ऑफ x minus 4 टा कौन हम x minus 4 हम x minus 4 x minus कैंसल है. सो 1 if x greater than or equal to 4 minus 1 if x less than 4 if x less than 4 जिते बड़े x वैल्यूटा 4 टू लेस हम एफ एक्स वैल्यूटा कौन हो माइनस 1 हम जिते एक्स वैल्यूटा 4 कि 4 टू ग्रेटर हो एफ एक्स वैल्यूटा कौन हम 1 हम. फॉर एग्जांपल हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2. सो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 हम सॉरी एफ ऑफ 2 कौन हम एफ ऑफ 2 टा 2 माने कौन 4 टू लेस हो 4 टू लेस माइनस 1 हम.
एफ ऑफ 3 कैलकुलेशन करो एफ ऑफ 3 मैंने -1 आगाब एफ ऑफ 7 हम एफ ऑफ 7 मैंने 1 हम एफ ऑफ 100 मैंने 1 आगाब सो व्हाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ f(x) 1 or -1 therefore the range of the function -1 and 1 only two values so range equal to -1 and 1 okay. So in this way you have to calculate the modulus range of the modulus function okay. Next if f(x) equal to sin bracket pi square x plus sin minus pi square x then find f of pi by 2 so f of pi by 2 रो वैल्यू केते पचारछि हमको so first you have to simplify answer 1 here f(x) equal to sin pi square so pi means what pi means 3.141 so 3.14 square means 9 point something so 9 point something रो ब्रैकेट फंक्शन केते 9 हैला प्लस sin ऑफ एटा होचे -9 point something तो -9 point something रो ब्रैकेट फंक्शन -10x sin 9x sin of -10x means minus sin 10x this one is f of x now we calculate f of pi by 2 substitute x equal to pi by 2 तो sin 9 into pi by 2 minus sin 10 into pi by 2 okay so sin 9 pi by 2 sin 9 pi by 2 means sin कौन हम 8 डिवाइड कर दियो 2 हम इवन मल्टीपल ऑफ 360 पाई 2 पाई आने पड़ो नहीं कि सो 4 पाई प्लस पाई by 2 4 पाई प्लस पाई by 2 ओके because 8 pi plus pi 9 pi minus sin 5 pi now sin of 2 pi nearly equal to 0 so any multiple of 2 pi is 0 so this sin pi by 2 minus sin 4 pi 4 pi means 4 5 pi means 4 pi plus pi sin pi by 2 1 minus 4 pi 0 तो 4 pi plus pi sin pi बट sin pi देखो 4 pi means कौन होला 0 होची ना 4 pi 0 होला 0 plus pi sin pi so 1 minus sin pi 0 its value is 1 next number 2 so how to calculate the domain here f(x) equal to square root of the under function so f(x) is defined square root under function must be greater than 0 that means f(x) is defined if x plus 3 by 2 minus x into x minus 5 must be greater than 0 greater than or equal to 0 but 2 minus x and x minus 5 not equal to 0 स्क्वायर रूट भितर जहाँ अच्छी तार फिर कौन हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम किंतु डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल टू 0 हवा दरकार नहीं कि अच्छा दिस वन इज रेशनल अलजेब्रिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करिया गले प्रथमे x रो कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करिवो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी x रो कोएफिशिएंट को हमको पॉजिटिव करिया पड़ियो दैट इंप्लाइड हियर x + 3 अछि ऊपर x रो कोएफिशिएंट पॉजिटिव अछि तळे x रो कोएफिशिएंट एटी कोन अछि नेगेटिव अछि -t कॉमन नेबा x - 2 एटा x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट x - 2 and x - 5 not equal to 0 that is x not equal to 2 and x not equal to 5 okay so if we multiply negative sign x plus 3 here x minus 2 into x minus 5 कौन हम less than or equal to 0 हम so ऊपर आमर रूटा कौन आसियो -3 आसियो तलु रूटा कौन आसियो 2 आसियो गोटे 5 आसियो so नंबर लाइन लिखिबा गोटे -3 आइबो आ गोटे 2 other is 5 this is minus infinite it is plus infinite so the rightmost region is positive because all the coefficient of x is positive सब जगह फैक्टर रो x रो कोएफिशिएंट पॉजिटिव अछि माने राइटमोस्ट रीजन पॉजिटिव होबो एटा कोन होबो नेगेटिव होबो तापटा पॉजिटिव तापटा नेगेटिव होबो एला हमको नेगेटिव पार्टा कंसीडर करिया पड़ियो सो माइनस इनफिनिट टू -3 यूनियन 2 to 5 since x plus 3 by x minus 2 into x minus 5 less than or equal to 0 and x not equal to 2
कमा 5 x लेस देन नॉट इक्वल टू 5 देखो लेस देन इक्वल टू माने हमें क्लोज कंसीडर करिया पड़ो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू -3 -3 ना कौन करिया पड़ो क्लोज यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to 5 करिया पड़ो किंतु कौन अछि बट हियर x नॉट इक्वल टू 2 एंड 5 so इसमें 2 डा 5 डा इडी ओपन करिया पड़ो देयरफॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन df इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू -3 डा क्लोज होबो यूनियन ओपन इंटरवल 2 5 यूनियन ओपन इंटरवल 2 5 जेतु इडा डिनोमिनेटर अछि डिनोमिनेटर जदी इक्वल टू 0 होउछि so the function is undefined so we take the open bracket 2 5 okay now the domain of the function is minus infinity -3 union open interval 2 and 5 okay now third one is find the domain of the function fx equal to root over 5 mod x minus x square minus 6 third one fx is defined if square root under the function must be greater than equal to 0 that means 5 into mod x minus x square minus 6 टा कौन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पड़ो जेहेतु ये mod x अच्छी तेणु x स्क्वायर टाक आम mod एक्सप्रेस करिया पड़ो यू नो mod x मीन्स प्लस और माइनस x तो mod x स्क्वायर मीन्स प्लस और माइनस x स्क्वायर तो प्लस और माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर दैट्स व्हाई x स्क्वायर इक्वल टू mod x स्क्वायर दैट इम्प्लाइड 5 into mod x माइनस ये x स्क्वायर बदल रे आम mod x लिखा पड़ो बिकॉज हियर mod x इज देयर दैट्स व्हाई वी राइट x स्क्वायर इक्वल टू mod x स्क्वायर माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये आम mod x रो स्क्वायर अच्छी ना कि mod सपोज पुट mod x इक्वल टू y आम mod x टा y नहीं जावा दैट इम्प्लाइज 5y माइनस y स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y स्क्वायर कोफिशिएंट को आम पॉजिटिव करिया पड़ो ना कि हाइस्ट पावर पॉजिटिव करवा तो माइनस टी कॉमन ले कौन होची y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं हाइस्ट पावर कोफिशिएंट को पॉजिटिव कले कैलकुलेशन टा इजी होबो ना कि दैट इम्प्लाइड y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 हले आपको फैक्टराइजेशन कले कौन आसीओ y माइनस 3 इंटू y माइनस 2 कहीं मल्टीप्लाई कले माइनस 5 होबो है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y प्लस 6 है लेस देन इक्वल टू 0 सो रूट टा कौन आसो ये देखो यहाँ को 0 कले गोटे 3 आसला गोटे 2 आसला तेणु तुम नंबर लाइन लिख 2 3 यहाँ हूँ प्लस इनफिनिट यहाँ हूँ माइनस इनफिनिट जेहेतु y माइनस 3 इंटू y माइनस 2 अच्छी ऑल द कोफिशिएंट ऑफ y आर पॉजिटिव सो द राइट मोस्ट रीजन इज पॉजिटिव आम सब कोफिशिएंट को पॉजिटिव करिया पड़ो लीनियर फैक्टर ना ना इच फैक्टर कोफिशिएंट पॉजिटिव कले राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव हम सो एटा पॉजिटिव है एटा नेगेटिव एटा पॉजिटिव है अच्छा लेस देन इक्वल टू 0 माने कौन हम नेगेटिव पार्टा कंसीडर करिया पड़ो नेगेटिव पार्टा कंसीडर करिवो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 3 y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 3 सॉरी क्लोज इंटरवल हवा पड़ो कहीं लेस देन इक्वल टू अच्छी ना सो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3 दैट इम्प्लाइड y लेस देन इक्वल टू 3 and greater than equal to 2 so what is y means mod x actually you calculate the value of x not y तेणु mod x टाक आम y ने कैलकुलेशन कले y जगह पकई दियो mod x सो y टा कौन हम लेस देन इक्वल टू 2 हम y टा लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ना दैट इम्प्लाइड y लेस देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3 टू लेस हम 2 टू ग्रेटर हम एमदी ओके अच्छा सो y मीन्स mod x तो mod x लेस देन इक्वल टू 3 एंड y मीन mod x तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओके देखो y रो वैल्यूटा आम mod x सब्स्टिट्यूट कले mod x लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स यू नो x मस्ट बी लाइज इन बिटवीन mod x लेस देन a मीन्स x वाला को भीतर माइनस a टू a भीतर so x लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3 then mod x greater than equal to 2 mod x greater than 2 means
एक्स रैल्यू कौन हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम और एक्स लेस देन इक्वल टू -2 बिकज यू नो मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन और इक्वल टू -a अच्छा गोटे एक्स रैल्यू -3 to 3 भितर रंड आउ कौन हम एक्सटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू -2 तार तो ये एक्स रैल्यू कौन हम 2 टू बड़ सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू इनफिनाइट यूनियन ये कौन अच्छी -2 टू लेस हम -2 टू लेस हम माने कौन हम -इनफिनाइट टू -2 क्लोज इंटरवल सो ए दीटा सेट्र यूनियन आउ एटार इंटरसेक्शन आमको बाहर करा पड़ो एक्चुअली डोमेनटा -3 to 3 भितर एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इनफिनाइट यूनियन -इनफिनाइट टू 2 अच्छा देखो टोटल डोमेन बाहर करा गले आमको कौन करा पड़ो ये ना कि फास्ट एटा -3 नियो -3 एटा 3 ए सेटा गोटे आसला आउटे 2 टू इनफिनाइट एट रो 2 एट रो -2 सो एटा हूँ 2 3 पूर्व 2 एटा हूँ -2 अच्छा ये आसो कौन हो 2 टू इनफिनाइट एटा हूँ प्लस इनफिनाइट एंड दिस इज माइनस इनफिनाइट है अच्छा -2 टू इनफिनाइट एटा आउट माइनस इनफिनाइट टू 2 सो ओभरलैपिंग केती अच्छी ओभरलैपिंग है देख आम टे भलार कैलकुलेसन करवा भला ड्र करिया नंबर लाइनटा सो नंबर लाइनटा ड्र करिया गले आम कौन करिया पड़ो देख एटा हूँ -3 एटा 3 एटा अच्छे 2 एटा अच्छे -2 तेना -3 to 3 एति रहा 2 टू इनफिनाइट या रहा 2 टू इनफिनाइट एटा हूँ -इनफिनाइट 2 सो आर इंटरसेक्शन पॉइंटा कौन भीतर रहा -3 to -2 and 2 to 3 therefore the domain of the function कहीं a set आउ a set इंटरसेक्शन हूँ टोटल डोमेन हम ओके सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन df इक्वल टू क्लोज इंटरवल -3 to -2 हम कहीं ये 3टा -3टा क्लोज अच्छे ये भी 3टा क्लोज अच्छे ये 2टा क्लोज अच्छे -2टा भी क्लोज अच्छे ना कि अच्छा हेल्ले इंटरसेक्शन पार्टा आसो -3 to -2 -3 to -2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 2 to 3 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to 3 हम ओके 2 to 3 so this is the domain of the function either -3 to -2 close interval union 2 to 3 union close interval 2 to 3
how many function can be defined from set A to B, whereas mode A equal to M and mode B equal to N. Okay. So you know function means each element of set A related to only one element in set B. A set रो जतलो सब जाक उपादान B set रो जेकोसी गोटे उपादान सहित रिलेशन रखिथिबो, then that relation must be a function. Suppose A1 can be related any one of n element in n ways. A1 टा B set रो जेकोसी गोटे उपादान सहित रिलेशन रखि परियो. So the element A1 can be related to one element in how many ways? N ways. N ways. So A1 टा n प्रकार वे रिलेशन रखि परियो. Similarly A2 is also related to only one element in set B in how many ways? N ways. A3 is also related to any one element in n ways. Last one AM is also related to any one element of B set in n ways. So all the element of A can be related in how many ways? N into n into n dot 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 n. So how many element in your A set? There are m element up to m times. Are you understand? देखो पहले number of function बाहर करिया गले A set रो प्रत्येक उपादान B set रो जेकोसी गोटे उपादान सहित रिलेशन रखिबो. A set रो गोटे उपादान B set रो गोटे उपादान सहित रिलेशन रखि परियो केते प्रकार होबरे? n प्रकार होबरे. Similarly A2 is also related in n ways. A3 is also related n ways. AM is also related n ways. So the number of functions equal to n into n into n up to n m times. N to the n को आम जो m times multiply करिया, you will get n to the power m. So n means mode B to the power mode A. So the number of function from set A to B equal to mode B to the power mode A. Okay, this is the number of function from A to B, and you know number of relation from A to B equal to number of subset of A cross B, and this is 2 to the power m into n. But the number of function from A to B equal to mode B to the power mode A. So these are all the concept of the function. So the relation and function is the very important chapter. So using this concept you can do all the problems of the study material. आम study material गुड़ाए क्वेश्चन आम आंसर कले ना नहीं आउ किसी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक रो भी करछे निजे ट्राई करो. यू कैन डू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टडी मटेरियल और योर टेक्स्ट बुक. ओके, इफ यू हैव अ डाउट देन आस्क मी इन गूगल मीट क्लास. ओके, थैंक यू. सो नेक्स्ट क्लास वी डू मेथड ऑफ इंडक्शन. थैंक यू.